Hello my dear students, today we are going to start the DBMS part 2 and in this session we are going to learn about how to create and how to edit tables using wizard and SQL commands. SQL I am saying for this SQL. Okay, it is usually called SQL. Now, first of all, let's have a quick revision which already we have learned and but still that can be asked in your exam. First of all, what is an RDBMS? The data in a relational database management system is organized in the form of tables. Means when multiple tables, more than one table is included in the database and all the tables are interrelated with each other, then that software is called RDBMS. Okay, मैंने main points क्या बताए? Multiple tables are included and number 2, all the tables are interrelated with each other. Right? चलिए, next is tables. What is a table? Table is a set of data elements or you can also call it values that is organized using a model of vertical columns and rows. Means simple language में we can say that when data is maintained, the values are kept using the columns and rows. Column rows हमें पता है, vertical standing जो होते हैं they are called columns and horizontally lines are called rows. A table has a defined number of columns but can have any number of rows. Means column we have to fix that my table will be having 5 columns, 6 columns, means as many columns we want we can have in our table. But rows can be any number of counting. Fine, jitni rows hame add karne we can add it on. Right? Then each row is identified by the values appearing in a particular column, identified as a unique index or the key field. Means in the last session we have discussed about the primary key. Right? A column in every table which have the unique values and not any null, or you can also call it blank values. Right? कोई डुप्लीकेट नहीं होगा प्राइमरी की में, कोई रिपीटेड वैल्यू नहीं होगी, नथिंग विल बी ब्लैंक and that value is used to identify a unique identification of that particular record. Right? चलिए, next is columns, fields or attributes. These all three are synonyms. Right? Columns भी कह सकते हैं, fields भी and attributes also. A column is a set of data values of a particular simple type, one for each row of the table. Means already we have discussed that they are the vertical pillars in the table and they have a particular heading for each and every record. Right? Column provides the structure according to which rows are composed. Rows का कैसे compose होंगी? When columns are there. Fine. So they provide a basic structure for creating that. Now rows, records, or you can also say it tuples. All three are synonyms. हमें पता होना चाहिए कि column के तीनों same words ये हैं and rows are also called as rows, records and tuples. A row also called as record or tuple represent a single data item in the table. Means a complete row is a complete record for one individual, for one item. Okay. In simple terms, a database table can be visualized as consisting of rows or columns, rows and columns. Each row in a table represents a set of related data and every row in a table has the same structure. Right? हमें clear है? Tables and rows and columns. Now, next topic after table, our base will be having queries tab. Now, what is a query? From the name, it is very much clear that queries are used to ask question. जब भी हम क्लास में पढ़ाते हैं तो यूजुअली हम पूछते हैं एनी क्वेरीज देयर, मीन्स कोई डाउट हो किसी को, कोई क्वेश्चन पूछना हो, तो दैट्स
called a query. Same meaning is here. Means query means to ask any question. किससे पूछेंगे भाई क्वेश्चन? From the database. जो भी database tables records हमने बनाए हैं related to that database, if any particular information we want, then through the commands that can be retrieved, and that is called a query. Fine. Means these queries are used to retrieve records or data based on certain conditions, certain criteria, और जैसा हमें चाहिए वैसा data लेना. Right? They are also used to perform actions such as insert, delete, update, depending on the criteria specified by the user. Means queries are also used if we want to add data in the table, we want to delete data from the table, or we want to update the already existing data. Right? So these are queries, or you can also say that such type of commands, few type of commands which can be used to ask any type of question from the database, or inserting, deleting, updating the record. Right? Now next is forms. Form. Generally online medium provides a number of forms for applying for a particular course, for particular website registration. Everywhere we got a form. तो क्या है form? Let's see. A form has an attractive interface that accepts data from the user and inserts it in the corresponding table or query. Means क्या सीखा हमने? It's the easiest way to accept data from the user. Means हम लोगों से data लेते हैं, website है, जो भी है, they accept the data from the user and collect that data in a form of a table automatically. कोई मेहनत नहीं. हम लोग तो कैसे फिल करते हैं? Like name का कॉलम है, name, आगे बॉक्स में name लिखा, class, roll number, section, father name, mother name, like that information we used to fill in the form. But at the back end, collectively they are received by the creator in the form of table. Right? तो automatically एक database में table records that is automatically created. Right? Now next is reports. As from the name it is clear that reports is something which can be in presentable manner, or which can be taken or put in the printouts form. Right? So reports are used to display the selected data in a printable form, in a printable manner. These are used for decision making and analyzing the data by the organization. Right? Now a new topic is there, that is data types. What is data types? As from the name it is very much clear that types of data means the data, the values which we are entering in the table, what is the type of that data? That is called the data type. Right? Means type of data means whether your data is in numeric form or your data is in character form. Means अल्फाबेट्स में लिख रहे हैं, न्यूमेरिक्स में लिख रहे हैं, टाइम के फॉर्मेट में लिख रहे हैं, डेट का फॉर्मेट है, या कोई भी फॉर्मेट नहीं, सिर्फ यस नो का आंसर है. तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंट्रीज इन द टेबल. राइट? तो ऑन डिपेंडिंग अपॉन दोज एंट्रीज स्पेसिफिक types are decided for the data, and those types are called data types. Right? These are used to identify which types of data we are going to store in the database. Right? The same thing I told. Fields themselves can be of different types depending on the data they contain. Right? Fields means columns. Data types in OpenOffice Base are broadly classified into 5 categories. These are the 5 categories I have written here. Numeric, नाम से clear है, means where numbers are used. 0 to 9 digits are used. Right? Then alphanumeric, from the name, alphabet plus numerics. Then binary, date and time, or any other variable types. Now let's see them one by one. First of all, the numeric data types. Means हमें जरूरत कहाँ पड़ेगी इन data types की? When we will be creating the table.
Then for every column we have to tell the OpenOffice base कि मुझे किस कॉलम का किस टाइप का डेटा टाइप चाहिए. Then that type of data we can enter into the table, otherwise other data type we cannot enter. Right? Suppose मैंने numeric data type के लिए integer ले लिया, तो in that particular column I cannot enter any alphabet. Right? For that purpose, for putting such type of validation, we use data types. Now in numeric data types, these are used for describing number values, numeric values for the fields or for the columns, which is in our table of database. Right? Numeric data types in a database can be used for storing numeric information. अब numeric information क्या हो सकती है? It can be a mobile number, numbers में ही होता है ना, रोल नंबर भी नंबर्स में होता है, मार्क्स फॉर एनी सब्जेक्ट, मार्क्स भी नंबर में होते हैं, हाउस नंबर नंबर में ही होता है ना. बट दैट विल नॉट इंक्लूड एनी स्पेशल कैरेक्टर, डैश, स्लैश, ऑब्लिक, ये सब हम यूज करते हैं, दैट कैन नॉट बी यूज हियर. राइट? तो सिर्फ हाउस नंबर या डोर नंबर के लिए हम यूज कर सकते हैं. ईयर, सिर्फ ईयर मान लो 2020 है तो दैट इज अ नंबर ओनली. लेकिन पूरी डेट लेंगे तो दैट्स नॉट अ नंबर, बिकॉज इन द डेट या तो डॉट लगाते हैं या डैश लगाते हैं या स्लैश लगाते हैं, है ना, तो दैट विल नॉट बी अ नंबर. देन any statistical value or any numeric value, all those can be included in the numeric type of data. ठीक है? तो now I think we can identify कि what type of data type will be there for our column. वो हमारे column पे depend करता है. राइट? तो न्यूमेरिक डेटा टाइप के कॉलम्स के एग्जांपल क्या होंगे? रोल नंबर लेना हो, मोबाइल नंबर लेना हो, सिर्फ डोर नंबर लेना हो, मार्क्स और टोटल, ऑल दोज टाइप will be included in numeric data types. Now here you can see I have arranged them in the increasing order. किस चीज का increasing order? Means their memories allocation या smaller to bigger values they can store in the that particular column of your table. Here you can see if I want to enter in my column only the values of yes or no, or you can also call it 0 or 1. 0 means false or 1 means true. Right? If I want to enter that, then this boolean data type we will take. उसके बाद 0 to 255. If we are taking in our table the numbers in between this range, then we can take 10 inch. Right? Then little bit more small int, range थोड़ी सी बढ़ जाएगी, फिर थोड़ी और range बढ़ जाएगी, that become integer, then big integer, then numeric, means the range of entering the values is increasing. Right? Till here they are integer, means without decimal numbers है यहाँ तक. तो जनरली ना हम ज्यादा बड़े पे जाते हैं ना छोटे पे. We used to use this integer data type wherever the numeric numbers entry are required for column. Let it be same, we'll take integer data type. Right? Easy भी है याद करना integer. Right? But if we have decimal values, we are supposed to have decimal values in our field, then there are these 3 or 4 different data types. Decimal, they are again arranged in the increasing order of their capacity. कितना बड़ा number we can store in them. Right? So here you can see the ranges are given. The smallest decimal number can be stored in decimal, then real, then float and double. And for being a safe side, everywhere, wherever we will be using the decimal in our column, then data type we will use double. सबसे बड़ा है, the biggest range it have, either float or double, anyone we can use. तो आप देखेंगे decimal and real and all other these data types, these are used at almost nowhere. Okay, we can use, but for safe side हम एक या दो ही data type maximum use करते हैं. Like numerics के लिए we use integer, decimals के लिए we will use double, right? And same way we'll carry on. Then alphanumeric types. Alphanumeric, as it is clear from the name that alphanumeric is the text entries. Simple words में text entries means alphabets are used. Here नाम से clear है, alphabet plus numeric.
है ना। तो ओनली न्यूमेरिक के लिए तो हमने इंटीजर ले लिया, बट वेन एवर एनी अल्फाबेट और एनी स्पेशल कैरेक्टर डैश लगाना है, कॉमा लगाना है, डॉट लगाना है, तो फॉर दैट केसेस वी यूज अल्फा न्यूमेरिक। मीन्स सिंपल, सपोज नेम का कॉलम है, फादर नेम कॉलम इज देयर, राइट, एड्रेस कॉलम इज देयर, एड्रेस में हाउस नंबर न्यूमेरिक होगा बट रेस्ट ऑफ द एड्रेस विल बी इन द टेक्स्ट फॉर्म, right? So that is alphanumeric. Got it? Now alphanumeric have these data types and depending upon their capacity of holding the values. Here we will use only these two data types. Make it clear in your mind. Any of the data type we can use, but for safe side we will use char. Char is having the fixed memory allocation in computer's memory, and varchar नाम से clear है, variable character है, character ही, but it's varying. Means suppose a name I have entered ABC, ठीक है, और मैंने अपनी टेबल में डिफाइन किया है char ब्रैकेट में 5, जहाँ ब्रैकेट में फिक्स लिखा है यहाँ पर मैंने 5 लिखा, char data type and in the braces 5, तो क्या होगा, मीन्स इन द मेमोरी इट विल स्टोर 5 प्लेसेस, राइट, बट मेरा नाम है ABC, ओनली 3 कैरेक्टर्स आर देयर, बट स्टिल दिस char data type will allocate, will occupy 5 spaces, ठीक है, 5 मेमोरी एलोकेशन। मीन्स जितना स्पेस एक बार फिक्स कर दिया, चाहे आपका नाम उससे छोटा है या उतना ही है, इट विल allocate the memory, it will occupy the same memory, ना कम ना ज्यादा। but varchar means variable, नाम से clear है, it's varying, right? तो here it can occupy the less memory also and depending on your entry. Suppose ABC डाला है तो only 3 digits are there, तो जो बाकी बच जाएगी that will be the free memory, only place for those 3 digits it will occupy, it will not occupy the full space provided. Got it? चलिए, next is binary types. In the binary types, binary means 0 and 1 form. Binary data types are used for storing data in binary formats. Binary data types in database can be used for storing photos, music files. Generally we are not using this type of data types in our table because music files and photos, they are not supposed to be saved in the tables, but still if we want to have that, then we can have the binary data types. Only we should have the information that this type of data type is there. Got it? Now next data type is date and time. Suppose in my table I have a column of DOB, date of birth, then obviously date of birth will be written in the date format, है ना? And for date time data type we are used to describe date and time values for the fields of table. Means किस type की date डालनी है हम, we can define the format, and here you can see that suppose tables में DOB का column है और admission date का column है, okay, all that can be done. You can see कोई confusion नहीं है, date के लिए date data type है, time के लिए time data type है, right? And here date for different formats are there. It stores month, day and year. पहले month, फिर day, फिर year. DD, Y. In that format it saves. And time, it is stored in hours, minutes and then seconds, right? That type of information is stored. Now fifth data type जो other था, in that if बाकी जो मैंने बताए, if those data types you don't need, then other can be selected. It's stored serialized Java objects. These are specially used for the high level language programming, so we are not supposed to use it, just we should know. Okay, now next is how to start working with OpenOffice Base, how to launch it, how to install it, ठीक है, how to start it. Then for starting the MS Office Base we have to click on start. Then for programs we can open openoffice.org and then we are taken to OpenOffice
base. Then we'll get an dialog box. Let me show you side by side. And I am typing OpenOffice Calc. You can see here OpenOffice Calc opens, right? अगर दूसरा तरीका दिखाऊं तो click on start and here you can see OpenOffice. Let me move here. OpenOffice. Click on this. Now all the parts of OpenOffice are visible here. Click on OpenOffice base. Now this window opens in front of you, right? And this window asks you 3 questions, that whether you want to create a new database, आपने नया बनाना है, then click on it. If you already have a database, then it is asking open an existing database, कि भाई जो existing है that you want to open, right? Or online any of the database is somewhere else, बेस के बाहर कहीं database है, you want to connect to that can be selected. So right now we are creating it for the first time, so we'll choose create a new database and click on next, and from here it will ask that do you want to register your database. Let's register, and later on you want to open your database for editing. Yes, keep tick on this, right? These are done. Now click on finish. This is how we can, now it will ask to save your database. Let's save. Select the location wherever you want to save. I want to save on the desktop. Then enter the name of your database, my new database 1. Right, this name I have given and click on save. Now you will see that with the same name जो भी आपने दिया है, my new database 1, the database is created, right? This is the pane, menu bar, toolbar. This is database pane. These 4 different tabs are there. All 4 we have discussed. Table हमने discuss की, query, forms, reports, right? And here this is the task pane. Related to every tab, different task will open here, right? And whatever we will create, if tables are created, they will be visible here. Queries are created, they will be visible here. If forms are created, they will be visible here. Everything, whatever is created in related tab, the task as well as that particular thing will be shown to us, right? Now till here we have done. We have clicked on finish and we have saved our database. Database is created. Now first task is how to create a table. In OpenOffice base we can create a table in 3 ways, right? There are these 3 different methods: creating table in design view, and using wizard to create a table, and creating table using DDL or SQL commands. Here as I have shown you, we are seeing these 3 methods. This is not the method, these 2 are the methods: creating table in design view and use wizard to create table. And one more third method is creating table using the SQL commands. So today we are going to learn all these 3 methods. The first method is creating table in design view. In design view we want to create a table. For that, let's start it. Tables are the basic building blocks of database. You store data in the database in the form of tables. Obviously database may, if table is not there, then database is of no use, because database क्या है? That's a collection of organized data in the form of tables, है ना? database के अंदर tables ही तो हैं और tables के अंदर हमारा data है. तो the basic unit is creating a table. After creating the database from the windows, हमने अभी बना लिया. We can click on create table in design view. Already हमें दिख रहा है वो from the table tab, है ना? Then specify the field name and data type. Data type हम सीख चुके हैं क्या है, right? And now create a table with specifying the field name and data type. Then we have to specify the name of the table, right?
let's see, let's start it. This is my window. I'm just trying to make it little smaller. Yes, this is my window of base. Right, now we are learning how to create table in design view. Click on this button. Now this window opens. Right, this is the table design view. We are designing our table, means जो टेबल का स्ट्रक्चर है वो कॉलम्स होते हैं, रोज होती है, कौन से कॉलम की हेडिंग क्या है, कौन से कॉलम का क्या डाटा टाइप होगा, ऑल दैट वी कैन डिफाइन हियर. सपोज फर्स्ट कॉलम आई वांट टू क्रिएट, दैट इज रोल नंबर. Make it clear in your mind that any of the column number can't be started with numeric or no space can be included. Right? तो हमने स्पेस की बजाय हमने अंडरस्कोर यूज किया. Clear? Capital, small, anything you can use. Now roll number will be always in integer form, है ना? तो हमने सिंपल डिसाइड किया था that for numerics we will select integer. For text we will select text varchar. Varchar में ही फायदा है, we can also add the less text or the variable text. Right? Done. So here I'm selecting integer. Then I want to take name. Name will be in the which form? In the text varchar. Right? यहाँ से हमने where is the text varchar? Here I am getting. Right, click on text varchar and then I want to have the class. Now class can be, अब suppose मुझे 1 2 3 फॉर्म में न्यूमेरिक फॉर्म में क्लास डालनी है तो I'll take numbers means integer, and if in Roman numbers I want to add, तो Roman number क्या है, कैपिटल I 1 होता है, कैपिटल I को 2 बार टाइप करें तो that is 2, है ना? तो it means text आएगी, तो let take it text. Right, हो गया ये. Now next thing is creating a primary key in our table, means so that in that particular column no duplicate values can be entered and none of the value can be left blank. कुछ भी खाली नहीं छोड़ेंगे. Then click here. Suppose roll number को मैंने अपनी primary key बनाना है. Then right click here and you can see primary key. Now you will see this key here. It means in this column, this roll number column is created as primary, right? And save it. Now it will ask that what name you want to give to your table. तो हम क्या नाम दें? Table in design view. Without space मैंने दिया है. Table in design view. Right? एक अंडरस्कोर दे दिया. Clear? This is my table. जो भी नाम आपने देना है मैंने जस्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए दिया है. एंड क्लिक ऑन ओके. डन. सेव हो गया. यू कैन सी सेव बटन इज डिसेबल्ड. नाउ क्लोज इट एंड हेयर इन द टेबल पेन यू कैन सी टेबल इज विजिबल. टेबल में अभी हमने डाटा कुछ नहीं डाला है, नन ऑफ द रोज. राइट, वी कैन सी एंड वी कैन एड आवर डाटा इन द टेबल. टेबल बन गई. How we can see? Double click on this table and you can see table is here. Here we can click and type the data. Clear? Our second method is right click or here open. Right? चलिए. Next is this. I think it is clear. And when you save this type of table, suppose अब मैंने तो यहाँ पर in this view I have created this primary key. But अगर आपने नहीं बनाई suppose primary key, then when you save it will ask that you want to create a primary key. It will ask yes or no from you. जैसे ही आप yes करेंगे कि yes हमें बनानी है, ऑटोमेटिकली एक और कॉलम इससे पहले ID जिसमें ऑटोमेटिकली 1 2 3 4 that will be given. Automatically that entry will be there. तो that will be assigned. तो उससे बेटर है कि एक्स्ट्रा कॉलम अपने टेबल में ऐड करने से अच्छा है बिफोर सेविंग
assign a primary key to your table. Got it? Next is use wizard to create a table. अभी हमने डिजाइन व्यू सीखा. Now we are creating a table using the wizard. Wizard means nothing we are going to type. कुछ भी टाइप नहीं करेंगे. Everything is ready made. Only we have to select. Okay. Here in the task pane जहां पर अभी create table in design view था वहीं पर लिखा हुआ है use wizard to create table. We'll click on that. Then next window will open. From there we have to select either your table is business purpose or personal purpose. Select any option from the given two. Then different table names are there. As per your choice you can select the tables. Then for specific tables already made fields will be there. Select the field which you want and with this symbol we can add on the fields to our own table. Right? And in the next window we can update, we can change, we can edit the field names as well as their data types also. Right? And in the last step we can assign the primary key and finally the table will be ready. Let's see how it can be done. Chalo, we are back to the base. Here the second option, use wizard to create the table. Click on this. Right? Click here. This window opens. It is asking that आपकी टेबल बिजनेस पर्पस है और पर्सनल. चलिए let it be personal. ठीक है जी. And from here we can select any type. Suppose plants है. Right? मैंने plants लिया. Or anything else you want to take. Let's see what's there in business. Any table related to school I want to take. I think that's not there. चलिए कस्टमर्स टेबल लेते हैं. राइट? इन द कस्टमर ही लेते हैं. हेयर फर्स्ट ऑफ ऑल कस्टमर आईडी. लेट्स टेक 3 ही कॉलम लेते हैं हम जैसे पहली टेबल लिए. राइट? देन कस्टमर नेम लेंगे. कहां पर है भाई कस्टमर नेम? कंपनी नेम है. दिस इज द फर्स्ट नेम. ओके. क्लिक ऑन दिस. फर्स्ट नेम डन. नाउ नेक्स्ट हमें क्लास लेनी है. Class means what? क्या ले सकते हैं? Whatever you want to take, you can take it. Customer ID is there. That's not there. चलिए company name ले लेते हैं. Okay, done. These 3 columns done. और जितने भी आपने लेने हैं that सारे लेने हैं in one go, you can click here. कोई गलती से इधर आ गया, click here and send that back. ठीक है? Done. These 3 columns finalized. Click on next. नाउ तीनों कॉलम यहाँ पर आपको दिख रहे हैं. यू कैन चेंज. चलो ये कस्टमर आईडी मुझे रोल नंबर बनाना है. कर दिया मैंने रोल नंबर इसको. राइट? और इसको इंटीजर दिया है. डेटा टाइप यू कैन चेंज ऑल्सो. वही तरीका है, सब कुछ वही है. डन. सेकेंड कॉलम. हेयर फर्स्ट नेम की बजाय ओनली नेम आई वॉन्ट. कर दिया नेम. टेक्स्ट डेटा टाइप ओके है. देन कंपनी नेम. दिस कंपनी नेम मुझे क्या करना है? क्लास बनाना है इसका. कर दिया मैंने. एंड टेक्स्ट डेटा टाइप डन. isn't it easy? Everything is done. मेहनत बहुत कम. Click on next. Now it is asking, do you want to create a primary key? And these 3 methods are there. Automatically it will add a primary key. मीन्स जैसे मैंने बताया था एक ID करके कॉलम अपने आप ऐड हो जाएगा. And that will automatically show the values 1, 2, 3, 4. Right? If you want that, you can click on this. And use an existing field as a primary key. You already have columns and you want to take from them. Then click on this and from this option, suppose मुझे roll number करना और automatically you want to show means 1, 2, 3, 4 automatically that will come. You can tick on this. Or if you want to enter your personal roll number, then you can untick this. Okay? Let me have tick on this. Clear? And here, if in your table you want to assign a primary key with combination of 2 columns, जो हमने पढ़ा था in the last session, composite key, right? तो that अगर 2 कॉलम को मिला के एक प्राइमरी की आपने बनानी है, you can click on it and you can select any 2 columns and send them here. That will be counted as your primary key. अभी हम single primary key से काम करेंगे. Click on next. It is asking to name your table. जो भी नाम आपने देना है. अभी कस्टमर बाय डिफॉल्ट है. चलिए मुझे अपना नाम देना है इसमें. टेबल इन
विजार्ड, जैसे हमने पहले वाला नाम, राइट। एंड इट इज सेइंग अभी डाटा डालना है, मॉडिफाई करना है डिजाइन को, और यू वांट टू क्रिएट। चलिए क्लिक ऑन इंसर्ट डेटा immediately. Right now we want to enter the data. Then click on finish and you can see table is here. हमने auto select किया था, that's why it is auto fitted. Here you can enter the data and it will be carried on. Done. We can close it. You can see the table is created. जितनी table बनेंगी all will be visible here. Got it? This is how we can create the table using the wizard. क्लियर? चलिए नेक्स्ट इज क्रिएटिंग टेबल यूजिंग सीक्वल और डीडीएल कमांड्स। अब ये सीक्वल डीडीएल कमांड्स क्या है, पहले सीक्वल देखते हैं। सीक्वल इज क्या है? इट्स अ सॉफ्टवेयर विच इज यूज्ड टू मैनेज और मैनिपुलेट द डेटा इन द डेटाबेस, राइट। इट्स अ सॉफ्टवेयर in which through commands we can create, we can manage, we can manipulate क्या? The data in the tables of database. In SQL different types of commands are there. Two types of commands we are going to discuss, DDL and DML. आज के सेशन में हम DDL डिस्कस कर रहे हैं, in the next session we will discuss DML, right? DDL full form is data definition या फिर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। नाम से क्लियर है, दोज कमांड्स विच आर यूज टू डिफाइन, मीन्स बेस बनाने में जो कमांड यूज हो रही है। सपोज टेबल का सिर्फ स्ट्रक्चर बनाना हो, दैट इज द डीडीएल कमांड। टेबल में डेटा डालना, टेबल में डेटा डिलीट करना, वो सब दैट इज नॉट डिफाइनिंग, दैट इज नॉट डेटा डेफिनेशन, ठीक है, दैट इज डेटा मैनिपुलेशन। टेबल बनाना मीन्स टेबल का स्ट्रक्चर बनाना, दैट इज अ डीडीएल कमांड, राइट। डीडीएल कमांड्स दैट डिफाइन डिफरेंट स्ट्रक्चर इन द डेटाबेस, राइट। जैसे क्रिएट किया, कोई कॉलम ऐड किया, कोई कॉलम डिलीट किया, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रक्चर चेंजेस, राइट। मेन डीडीएल कमांड्स आर क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न दिस कमांड, क्रिएट कमांड, राइट। Now to create a table, चलिए हम स्टूडेंट टेबल बनाए या नहीं बनाए, आपकी मर्जी, जो भी नाम मैंने यहाँ स्टूडेंट लिखा है। It's not a compulsion that you will create the table with student name, that's your choice. What we have to do, we have to go to tools menu. From that shown options we will click on SQL, ठीक है, SQL option is there and in there a box is there, command to execute. Command to execute box will be visible, in that you have to type the command. अब सिंपल ध्यान से समझेंगे कमांड। देखो बेटा कमांड्स है ना यहाँ पर, दे आर रिटन इन वेरी कैजुअल वे, मीन्स जैसे हम बोलना चाह रहे हैं कमांड्स को, इन द सेम वे दे आर रिटन। मीन्स सिंपल कमांड है क्रिएट टेबल, मीन्स भाई टेबल बनाओ। क्या बनाओ? ये वाली टेबल बनानी है, जो भी नाम आप देंगे, वट एवर द नेम यू आर गोइंग टू गिव। देन इन द ब्रेसेस कॉलम सीरियल वाइज, कॉलम नंबर 1 उसका डाटा टाइप कॉमा, कॉलम नंबर 2 उसका डाटा टाइप कॉमा, कॉलम नंबर 3, लाइक दैट एज मेनी कॉलम्स यू वांट दैट वी कैन असाइन। इजंट इट इजी? बहुत इजी वे है। लेट्स सी, इट्स माय, अगेन वी आर बैक टू बेस विंडो एंड इन दिस लेट्स, two tables we have created, one is design view and another in wizard, right? Now we are creating table using the SQL command. Go to the tools, click on SQL, this dialog box opens and in this dialog box this command to execute box is there, means कौन सी command execute करनी है, that you will type here. It's not case sensitive, capital letters, small letters, जैसा आपने लिखना है you can write down. Okay, चलिए, command is create table, लिखा मैंने, ये मेरा फिक्स है। कौन सी टेबल बनानी है भाई, क्या नाम रखें टेबल का, हम बताओ। लेट्स नेम इट न्यू, ओके। और SQL टेबल, SQL वर्ड एक्चुअली दैट इज द प्रोग्रामिंग वर्ड, तो SQL वर्ड वी कांट यूज। चलिए लेट वी यूज टेबल 1,
Okay, no, I'm naming it new. अभी न्यू ही बोल रही थी तो लेट्स न्यू. ठीक है, मैंने कैपिटल में ऐसे दे दिया और यू कैन ऑल्सो राइट इट इन स्मॉल. चलिए मैंने स्मॉल में लिख दिया. ओके, आपकी मर्जी है. क्रिएट टेबल, टेबल बनाओ. कौन सी टेबल बनानी है? न्यू. ठीक है, अब हमें बताने हैं हाउ मेनी कॉलम्स, और वो भी ब्रैकेट्स में बताने हैं. पहला कॉलम व्हाट यू वांट टू गेट. चलिए फर्स्ट कॉलम मुझे रोल नंबर ही बनाना है, वो जो उन्हीं टेबल्स वाला बनाएंगे, सेम टू सेम वही बना के दिखा रही हूँ आपको. ठीक है, स्पेस इज नॉट अलाउड इसलिए मैंने अंडरस्कोर लिखा. देन स्पेस, देन डेटा टाइप. कैसा डेटा टाइप? रोल नंबर मैं इंटीजर में चाह रही हूँ तो ओनली यू कैन राइट इंट. क्लियर? एक कॉलम का काम हो गया. कॉमा. नेक्स्ट कॉलम क्या दूं मैं? नेम बनाना है हमें. चलिए नेम लिखा, स्पेस, इट्स डेटा टाइप. अब इसका डेटा टाइप क्या है भाई नेम का? दैट यू हमने वेरकर पढ़ा है, राइट? वेरकर और नेम के मैक्सिमम डिजिट्स सपोज 15 डिजिट्स तक हम वी कैन मेंशन. ओके, देन कॉमा, स्पेस, नेक्स्ट इज क्लास. थर्ड कॉलम मुझे क्लास बनाना है एंड डेटा टाइप ऑफ क्लास आई वांट टू गिव एज, अगर इफ यू वांट टू एंटर द क्लास इन नंबर्स 1 2 3 फॉर्म में डालना है देन इंट वी कैन टेक, और इफ वी वांट टू एंटर द डाटा इन द फॉर्म ऑफ varchar मींस रोमन नंबर्स में देन यू कैन यूज varchar. लेट्स टेक इट इंट. राइट, डन. Every SQL command ends with semicolon, right? Semicolon. Semicolon लगाया मैंने and this is called as terminator, means finishing the command. This semicolon is called terminator, right? And click on execute. If any error will be there, तो वो error यहाँ show होगा. If your command is okay, then it will show command successfully executed. Right? हो गया हमारा काम. टेबल बन गई है ना? Click on close. Done. This is how we can create table. लेकिन मैंने टेबल बनाई दिखी तो नहीं भाई. What to do? हाँ? Then the best method is simply close it. पूरे बेस को क्लोज नहीं कर रहे हैं. We are just closing this database window and here we are again going to database. We are opening an existing database. Select your database. Automatically it is here and click on finish. Right, now click on tab. You can see तीनों टेबल जो हमने बनाई है, हमने अभी न्यू बनाई थी ना टेबल. You can see. Double click on it and you can see it is here. Still rows we have not entered, that we will enter. Right, done. This is how we can create table using the SQL DDL commands. Now how to add records or rows in a table created. For adding data into the table, we can see table name. दिख रहा है हमें under the table pane. The name is there. Two methods are there. Either you can double click on the table name or you can right click on the table name. दोनों method है. Then you will be able to see your table. There you can click and type the records as many you want and in the last you can save. Let's add our data. सबसे पहले हमने डिजाइन व्यू की टेबल बनाई थी. सब में सेम वे है. डबल क्लिक ऑन द टेबल व्यू, टेबल नेम. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट मेथड. सेकेंड मेथड राइट क्लिक और क्लिक ऑन ओपन. राइट, हेयर वी कैन एंटर. सपोज डालते जा रहे हैं हम नाम. क्लास हमने डाली 12. राइट, हो गया. नेक्स्ट आई एम यूजिंग टैब की फ्रॉम द keyboard. In this way you can mention whatever you want. Suppose I want to add only 3 rows. Done. Here you can see the button on the toolbar, save current record, or from file menu also the same button is available. Click on that button or that option wherever you want. The data is entered and you can save. We have already saved and you can close this window. This is how we can add records, or you can also call it rows in the table created. That's it for now. Thank you. Take care.